Okay, let us start now today's class. Okay, we will start from here. Last class I told you that you have to read the details of rational numbers. Okay, so today we will prove that the set Q of rational numbers is divisible. Okay, इसका मतलब divisible मतलब क्या है? Q से n में 1 1 1 2 map, we need to find a bijection map from Q to n. Okay, so how we will approach QC? Let first Q can be written as union of three sets: Q plus positive rationals, Q minus negative rationals, and include and 0. Okay, including 0. ठीक है, so here you see Q plus P upon Q and PQ belongs to Z plus. Okay, इसमें हम 0 नहीं ले रहे, 0 अलग से ले रहे हैं. ओके, Q प्लस में 0 नहीं है, याद रखिएगा. अदरवाइज PQ बिलोंग्स टू Z लिखा रहता है, वहां P0 भी हो सकता है रेशनल नंबर्स में, क्योंकि 0 इज ए रेशनल नंबर. जहां Q लिखते हो तुम लोग, यहाँ हम Q प्लस के सेट लिख रहे हैं. ओके, Q नहीं लिख रहे हैं. Q को तो तीन, we write here Q as union of three sets: Q plus union 0 union Q minus. Okay, positive rationals, negative rationals and 0. तो टोटल Q हो गया. ठीक है, so here we are defining Q plus P upon Q and PQ belongs to Z plus. याद रखिएगा, Q not 0, P not 0. Okay, और PQ GCD of PQ1, that is we are taking its simplest form. Okay, जैसे कोई फ्रैक्शन है हाफ है तो हम उसमें वो नहीं ले रहे. 2/4 भी तो हाफ है, so we will not take such repeated numbers, only once half. Okay, one half is equal to 2/4, so we will not take that number, only half. Okay, so like this way, simplest form. Okay, so let us define f from Q plus 2n cross n. Okay, by कैसे मैप है? as f of P upon Q equal to f comma Q. f P भी नेचुरल नंबर है क्योंकि Z प्लस है. Z प्लस का मतलब यही है, नेचुरल नंबर. ओके, सो Q इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर, सो इट इज ए मेंबर ऑफ n क्रॉस n. इसी तरह का हम मैप डिफाइन करेंगे. नाउ यू सी f इज 1 1 बिकॉज f of P upon Q इक्वल टू दो एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के वो लिखे. f of P upon Q इक्वल टू f of R upon S. ओके, so this is implies PQ, f of PQ equal to PQ, f of R upon S equal to RS by definition. Okay, here it is defined here. So f of R over S equal to R comma S. So this implies these two ordered pair equal. So therefore P equal to R and Q equal to S. Okay, so that means P equal to R and Q equal to S. So this P upon Q equal to R upon S, because P equal to R and Q equal to S. So P upon Q equal to R upon S. So here you took f of P upon Q equal to f of R upon S. You prove that P upon Q equal to R upon S. Just like fx equal to fy implies x equal to y. Okay, that means function is your 1 1. It is also well defined. Also you see from here, you take two elements. Okay, P upon P by Q equal to R upon S. Their images also equal, you see, and P equal to R and Q equal to S. Because we are here, we are taking simplest form, so you can write like this: P equal to R and Q equal to S. Otherwise you can't write like this. Okay, because if it is half, then it is 2/4, it may be 2/4. Okay, so but 1 not equal to 2 and 2 not equal to 4. So in this case you cannot write this. That is why we are taking this this one. GCD of PQ equal to 1 means, it means its simplest form. Okay,
सो सिंपलेस्ट फॉर्म जहां भी दो हमारे पास नंबर्स हैं, दो रेशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इक्वल है, इसका मतलब दोनों सेम है. ओके, नाउ सिंस f is 1 1, okay, and q plus is an infinite set, okay, of course q plus is an infinite set. Okay, positive rationals finite तो है नहीं, you will get infinite number of positive rationals, so q plus is an infinite set. और f is, f आपने प्रूफ कर दिया f 1 1 है, इसी सेट आपके इनफाइनाइट है और उससे आप 1 1 मैप भी कर रहे हैं. ठीक है, मैप 1 1 है तो वहां जो आपका जो इमेज सेट होगा रेंज f ऑफ q प्लस, वो क्या होगा, 1 1 तो है ही और सेट इनफाइनाइट है, तो देयरफॉर इमेज इज आल्सो इनफाइनाइट. दैट मींस f ऑफ q प्लस, इमेज को ऐसे लिखता है जैसे तुम लोग x टू y मैप है तो f ऑफ x इमेज है वहां y के अंदर. ओके, सिमिलर जस्ट लाइक हियर f ऑफ q प्लस इज एन infinite set since q plus infinite and f11 combining both this, okay, f11 and q plus infinite, then their image set means range of this map f is also infinite. और वो कहाँ है, ये f of image कहाँ जा रहा है हमारे n क्रॉस n में, मैप कहाँ डिफाइन किया है, डोमेन क्या है n क्रॉस n. ठीक है, n क्रॉस n के अंदर हमारा जो है वो रेंज है. ओके, इसका मतलब दिस इंप्लाइज f of q plus is an infinite subset of n cross n, उस डोमेन के सबसेट है, वहां रेंज राइट साइड में डोमेन के सबसेट ही होता है. ठीक है, so therefore since n cross n is denumerable, it is already proved, we have proved that n cross n is denumerable in the beginning lecture, starting lecture we proved that n cross n is denumerable. Okay, so f of q plus, why f of q plus, we already proved that a subset of a denumerable set is either finite or denumerable. Okay, so since it is not finite, so therefore only option you have denumerable. Therefore since it is denumerable, so its subset f of q plus is also denumerable. Okay, but now q plus is equivalent to f q plus. Okay, q plus is equivalent to f q plus. ओके, ये जो आपका जहां से मैप है वो आपने रेंज में वहां 1 1 मैप है, तो रेंज के साथ दिस मैप इज ऑलवेज ऑन टू. ओके, सो देयरफॉर q प्लस से f ऑफ q, you see here f of q प्लस, यार यहां से 1 1 मैप है तो यहां जो इसके अंदर यार your range is here, so q plus and range, these two sets are equivalent. Okay, always if map is 1 1 then it is always 1 2 with its range. Okay, this map is always 1 2 from this set to its range. Okay, so therefore q plus is equivalent to 1 1 on 2. Okay, range के साथ it is 1 1 on 2, so range is, what is range, f of q plus, or we have already proved that f of q plus is denumerable. Okay, so q plus is equivalent to f of q plus and it is denumerable, so therefore this set is also denumerable. Okay, q plus is also denumerable, equivalent, because equivalent sets, these two are equivalent sets, so ये आपके denumerable हैं, so therefore this set is also denumerable. q plus is denumerable. Similarly we can prove that q minus is denumerable. जैसे बिल्कुल सेम प्रोसीजर, आप एक पार्ट कर लीजिए, दूसरा पार्ट सिमिलरली करके लिख दीजिए. ओके, नो प्रॉब्लम. So q plus is, we have proved that q plus is denumerable. Similarly q minus is also denumerable. Similarly, now what we do, since q plus is equivalent to n, because q plus is denumerable, denumerable का definition ये set is said to be denumerable if it is equivalent to natural number. So q plus equivalent to n implies q plus union 0 equivalent to n union 0. Okay, no problem. q plus n के साथ equivalent है, so you add one element here and you will get, so 0 goes to 0. Okay, so it is again 1 1 and 1 2, so therefore q plus union 0 is equivalent to n union 0. But n union natural number union 0 is equivalent to n, it is trivial, because
if you can find this map, fn equal to n plus 1, here it is 0, then it will goes to 0 goes to 1, 1 goes to 0 goes to 1, 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, like this. Okay, so n union 0 is always equivalent to n, it is trivial. Okay, therefore this is equivalent to this and this equivalent to this. Okay, so equivalent, and this equivalent is by using transitive property. This q plus q union 0 is equivalent to n. Ultimately this equivalent to n and this equivalent to n. Okay, so therefore this equivalent to n, q plus union 0 is equivalent to n. Okay, so since it is equivalent to n, 1 1 on 2 map with n, so therefore this set is denumerable. By definition, this is denumerable, q plus union 0. So now what? Thus the set q of rationals, the union of q plus union 0. ये set जो है आपका q plus union 0, and this set is q minus is also denumerable. So union of, we already proved that union of denumerable sets is denumerable. Okay, so therefore this set is denumerable, q plus union 0. Okay, and q minus is denumerable. दो पार्ट हो गया हमारे पास. एक, you see here q plus union 0 and union q minus. Okay, this is q. So therefore their union is also denumerable, and that means q is denumerable. Okay, union of two denumerable sets is denumerable, and union of these two sets is nothing but your q. So therefore q is denumerable. You see here q equal to union of these two sets, and this is denumerable, this is denumerable, and their union of denumerable sets is again a denumerable set. So thus we prove that q is denumerable. Now we will prove that the unit interval I, it is called unit interval. Okay, length 1. This is, that is why it is called unit interval. The unit interval I equal to 0, 1, closed interval 0, 1 is non-denumerable. ये आपको प्रूव करना है कि it is non-denumerable. Okay, so we will prove this technique. To prove this, suppose contradictory, we let this unit interval 0, 1 is denumerable. Okay, we let it contradictory. Now we will show some contradiction. Okay, we will reach to some contradiction. So then its elements can be written in a sequence. We know a denumerable set can be written as a infinite sequence of distinct objects. Okay, so 0, 1 equal to x1, x2, x3, xn dot dot. Okay, this is an infinite sequence. Okay, now construct a sequence of closed intervals I1, I2 dash dash as follows. Consider the closed subintervals of 0, 1 as this 0, 1 third, 1 third, 2 third, and 2 third, 1. आप इसको तीन सब इंटरवल में डिवाइड किया है 0, 1 को, where each has length 1/3. Now x1 cannot belong to all the three intervals. Okay, x1 cannot belong to all the three intervals. That is, x1 cannot belong to at least one of the intervals. यहाँ से कोई x1 किसी बाउंड्री पॉइंट हो गया, if it is end point, then it will belong to at most two. At a time, it will not belong to all the three subintervals. Okay, yes, this is what mean. If it is some boundary point, some end point of an closed interval, then it will belong to at most two. See here, 1/3. If x1 is your 1/3, okay, then 1/3 is x1 is here, x1 is here, but it will not belong to here. So यही चीज कह रहा है, x1 cannot belong to at least one of the intervals. किसी एक में कम से कम नहीं है, मैक्सिमम दो में हो सकता है, बट तीसरे में कभी नहीं हो. ठीक है, सो इन वन, एक में भी मिड पॉइंट में कहीं हो तो वो तो एक ही में ही हो. ओके, इट विल नॉट बिलोंग टू टू ऑल्सो, बट possibility is there. If it is end point, then it can belong to at least two. Okay, क्योंकि this end point is repeating here also and here also, so it at most two में जा सकता है. Now let I1 equal to so belongs to
x1 कैन नॉट बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द इंटरवल्स इन वन. ओके, तो इन तीनों में से किसी एक में नहीं जा सकता. यहाँ तो है ही नहीं. 1/3 मान लीजिए x1 1/3 है, तो इट विल नॉट गो टू देयर. So let I1 equal to A1 B1 be one of the intervals in one such that x1 does not belongs to I1. Okay. So ये हम इंटरवल को मान लिया. Let I1 equal to A1, B1 a closed interval. We get a closed interval A1, B1. इन तीनों में से कोई एक, मान लीजिए ये है, सपोज ये. सो इसका हम नाम रख दिया A1, B1. तो ये I1 सब इंटरवल, एक I1 एक सब इंटरवल हमें मिल गया जिसके अंदर क्या है, x1 नहीं है. हमें एक ऐसा सब इंटरवल, वी फाइंड ए सब इंटरवल I1, इसका नाम हमने रखा है A1, B1 such that x1 does not belongs to I1. नाउ डिवाइड I1, जो भी आपका जो सब इंटरवल आपने लिया है, वहां से कोई एक आप सब इंटरवल आपने चूज कर लिया कि इसमें x1 नहीं है. देन अगेन यू ब्रेक दिस वन इनटू अगेन फर्दर 3. 1/3 लेंथ के जो है सब इंटरवल है उसको और आप 3 सब इंटरवल कर दीजिए उसको. ठीक है, ईच ऑफ लेंथ, देन ईच ऑफ लेंथ विल हैव 1/9. यहाँ जितने वो जो आपके पास जो सब इंटरवल आपने वहां से जिसको सब इंटरवल को कंसीडर किया है कि x1 उसी में नहीं है, उस सब इंटरवल को आपने 3 और सब इंटरवल में डिवाइड किया. अब फिर इन सब सब इंटरवल के, अब इस केस में इन सारे सब इंटरवल्स के लेंथ होंगे 1/n. ओके, ऑल द सब इंटरवल्स हैव लेंथ 1/n. सो सिमिलरली अब क्या करना है आपको, ये 3 सब इंटरवल ही होगा. सिमिलरली I2 be one of the intervals in 2. ओके, in 2 you see there are sub intervals 3. यहां से आप कोई I2 कोई भी एक होगा, ऐसे कोई सब इंटरवल आप चूज कर लीजिए विद द प्रॉपर्टी दैट x2 does not belongs to I2. ओके, x2 belongs to at most 2 just by previous step. ओके, प्रीवियस स्टेप में भी यही किया हमने कि कोई भी हम वहां से एक नंबर उठाएंगे x1 x2 x3, तो अब हम we choose x2. ओके, so x2 belongs to at most 2 sub intervals. That means x2 does not belongs to all the 3 at a time. ओके, सो यहां से हमने फिर दूसरा चूज कर लिया एक सब इंटरवल, सेट दिस वन I2. ठीक है, या I2 हमने नाम रख लिया A2, B2. ओके, सो I2 एक ऐसा सब इंटरवल मिल गया हमें जिसमें x2 does not belongs to I2. ओके, सो वी फाइंड अ सब इंटरवल I2 such that x2 does not belongs to I2. तो मैक्सिमम 2 में जा सकता है, बट इट विल नॉट बिलोंग टू थर्ड सब इंटरवल. ओके, तो सब इंटरवल हमने वो जो सब इंटरवल थर्ड सब इंटरवल उसी को we select it as I2 such that x2 does not belongs to I2. Containing in this manner, so we get x1 does not belongs to I1, x2 does not belongs to I2, x3 does not belongs to I3, like this. Now you divide this again 1/3 like this, and you will find an I3. Suppose it is I3 such that x3 does not belongs to I3, like this. So containing in this manner, we obtain a sequence of closed intervals I1, I2. Of course, its length is smaller than this. Okay, I1 contained in I1 contains I2, I2 contains I3, and I3 contains I4, like this. Contains IN, IN contains IN plus 1 dot dot dot. This is 3. Okay, this we have this closed intervals, say it is 3. Now such that we get these I1, I2, I3, IN such that xn does not belong to IN, because it is our construction. x1 does not belong to I1, x2 does not belong to I2, x3 does not belong to I3. So xn does not belong to IN for all and belongs to n. Okay. Then by the fact star intersection IN is non-empty. You see fact star is here. If IN is a sequence of, it means a family of closed intervals such that this इसी तरह का containment हो, I1 contained in I1 contains I2, I2 contains I3, like this. या तो या I2 contained in I1, I3 contained in I2, like this. Then intersection IN non-empty. Yeah, this is a fact property. You can check it. Okay.
This is a basic property. Okay. So by this fact, from this 3, we will say that intersection In is non-empty. Intersection In is non-empty. Okay. Now, since intersection In is non-empty, so this means there exists y belongs to this such that y belongs to every interval of 3. इसका मतलब जो हमारे पास जो क्लोज्ड इंटरवल के जो मेंबर्स हैं उनमें से कोई एक मेंबर है जो सब में बिलोंग कर रहा है. इंटरसेक्शन, सबकी इंटरसेक्शन है, नॉन एम्प्टी है. इसका मतलब सब में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, सो दैट वी आर गेटिंग सम इंटरसेक्शन. ओके, कोई एलिमेंट कॉमन है सारे सेटों में. Okay, that is why we are getting intersection as non-empty. Okay, that let this member is nothing but y. Okay, so y belongs to closed interval this such that y belongs to every interval of 3. 3 के जो i1 i2 i3 सारे सब इंटरवल जो है इन सब में y बिलोंग कर रहा है. ओके, नॉन एम्प्टी का मतलब यही है. इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मींस क्या है? सारे सेटों में वो एलिमेंट कॉमन है, कोई एक मिलता है, कोई एक. नॉन एम्प्टी मींस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मेंबर, मे भी ज्यादा हो सकता है बट कम से कम एक है. ओके, तो वो एक जो है इसका मतलब सब में है, i1 i2 i3 सब में है, तभी तो इंटरसेक्शन में वो है y आया हमारे पास. so there exists y belongs to this such that y belongs to every intervals of 3. but since y belongs to I और 0 1 के मेंबर्स कैसे हैं, हमने क्या सीक्वेंस रखा है 0 1 को कैसे डिस्क्राइब किया है, x1, x2, x3. सो इनमें से कोई एक हो. ठीक है, i1 में से ही y है, y is from i1 0 1 and 0 1 we already described x1 x2 xn infinite sequence like this. So therefore y will be some xn, y equal to xm for some m belongs to m. Okay, so by our construction y equal to xm does not belongs to im. You see, y equal to some xm. Okay, or y belong or but xm does not belong to im. It is our construction. We are taking always x1 not in i1, x2 not in i2, x3 not in i3. So therefore xm does not belongs to im. Okay, that means y equal to y is we are choosing y equal to some xm. Okay, so y equal to xm does not belongs to im, which is a contradiction because y belongs to every sub interval of 3. ये कॉन्ट्राडिक्शन है. ये तो हमारे पास है xm does not belongs to im और xm बराबर y है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y does not belongs to im और y कह रहे हैं हम i सब में है. i1 i2 i3 जितने सफिक्स में ऐसे हैं i1 i2 i3 हर नेचुरल नंबर के लिए i1 i2 i3 i4 im सब में y है. तो यहां से क्या हो, यहाँ we get y does not belongs to im, which is a contradiction to this statement. You see, y belongs to every sub interval of 3 and here you are proving that y does not belongs to im. Okay, so this is a contradiction because y belongs to every interval of 3. जी इस्लाम जी इस्लाम सर जी क्लास ले रहा था सर, 11:40 से क्लास. हाँ सर, ऑनलाइन ले रहा हूँ इसलिए कि ऑनलाइन तो सर. अच्छा जी जी जी. अच्छा, लेटर. जी जी. हाँ सर, उसी में बात मिलूंगा. आप आए क्या सर? अच्छा अच्छा. हाँ उसमें सर और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो भी बना रहा है वो, क्योंकि वो आपको रेडीमेड क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा. तो क्योंकि मेरे पास भी वो आया हुआ है ना सर, तो मैंने इसको दिया है कि इसका आंसर पहले बनाओ, 8-10 क्वेरी है उसमें, तो वो रेडीमेड आपको दे देंगे, वहां आपको पुट करना पड़ेगा. वो जो सब लिंक आएगा उसमें सर कई सारे क्वेश्चन है.
अच्छा 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 जी, अच्छा जी जी, अच्छा जी, अच्छा तो सर आप आएंगे क्या? जी जी, अच्छा जी, अच्छा ठीक जी, जी, हाँ by that's our assumption that I equal to 0 1 is denumerable has led to a contradiction. Okay, so this is the contradiction because here y belongs to every interval of 3 and here y does not belong to im, so it is a contradiction. Therefore, so we thus our assumption that I equal to 0 1 is denumerable has led to a contradiction. Therefore, our supposition was wrong. That is, I is non-denumerable. Okay, so this is the theorem. You see some basic properties of equivalent sets. If for any two sets A and B, A cross B equivalent to B cross A, and A cross B cross C equivalent to A cross B cross C equivalent to A cross B cross C. C, if A equivalent to C and B equivalent to D, then A cross B equivalent to C cross D. So just by simpling these maps, you see here, map is here, no problem. Okay, simply you can say this map is bijective. It is easy to understand. Okay, no need to do calculation. You can just by watching map you can see that these maps are 1 1 and 1 2. Okay, now last theorem, last problem of this maybe we can discuss in the next class, or okay we can discuss now also, but time is running out, it is already. Okay, so maybe we can discuss it in the next class. We have some other small problems. Okay, so we will finish these topics in the finish this topic in the next class. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. Okay. बहुत कम लोग हैं, बताइए। आठ ही लोग हैं जी। सर 6 हैं। हाँ, 6 नहीं 7 तो, हाँ 6 और एक अभी और ज्वाइनिंग है सब खाली 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही हैं। एक असफ अली भी, ही इज आल्सो ज्वाइनिंग. Okay, so there will be 7. 1 minute, let him to come in. Okay, okay, there are 7, so I am taking screenshot. Okay, see you in the next class. Okay, sir. Okay, I will send these PPTs to you. Okay, हाँ सर, वो बेहतर रहेगा। उसी से ही पढ़ना है, लेक्चर देख लेना कैसे समझाया क्या किया, बाकी जो है आपको पढ़ना है उसी से पढ़ना है. ओके, ये देख लेना एक्सप्लेनेशन कैसे हमने क्या कहा है, उसको बार बार देख लेना. मान लो कोई डाउट होता है, कुछ होता है, कैसे क्या है, ये बहुत ही इजी है. इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा. ओके, इफ you have any problem or any query, then you can ask me in WhatsApp. You can take screenshot and ask me this line, that line. Okay, or you may call me. Okay, Okay, sir. my WhatsApp number. Okay, no problem. I am always ready to explain you. Okay, according to me there is no problem. Okay, Yes, sir. कोई मुझे नहीं लगता कोई आप लोगों को दिक्कत होगा. ओके, इफ यू हैव फाइंड एनी स्टिल यू हैव फाइंड एनी प्रॉब्लम, देन अगेन यू कैन आस्क मी वेयर यू आर finding problem. You can take screenshot of this page of that line where you are facing problem. You can ask me how this line come, from where come, how it is. Okay, I am always ready to explain you. Okay, जी सर. रटना नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये रटने का नहीं है, याद बता दे रहा हूं. Okay, see you in the next class, maybe Monday, second, third period. Okay, Okay, sir.
ओके अस्सलाम वालेकुम।